and gentlemen, these awards are called the Spinner Awards. This award is for our spinner partner who has demonstrated the largest shifts from alternative fibers to Birla cellulose fibers during the year. And this award is being presented to Lucky Yarn Tex India Private Limited. The small segment is defined as those spinners who have installed a spindle base of 25,000. This award is for our spinner partner who has shown highest growth in consumption of Birla cellulose fibers during the year as compared to the previous period. Ladies and gentlemen, this prestigious award is being presented to Hariharan Spinners India Private Limited. Textiles. Our largest partner award for offering Birla cellulose in the small segment is being presented to Bharti Spintech India Private Limited. Can we have Bharti Spintech on stage, please? Brings us to our sixth award of the evening. This award celebrates the overall highest consumption of Birla cellulose fibers during the year in the medium segment. Well, since we're talking about victory, how could we not present this award to Victory Spinning Mills Private Limited? Thank you very, very much, Ms. Ranaut. Thank you. Thank you very much, Mr. Gopal. For me, fashion is an expression, or fashion is all about your attitude and how you express yourself, and about being comfortable, because it's beauty is in your confidence. So it all, I think, sums up to a great personality, and I think that's pretty much what fashion is for me. So as and when you grow as a person and how your attitude changes for life. Like I remember when I was in my
teens, I saw life differently. When I was in my early 20s, I was different. And now my perception of fashion is completely different. So it's beautiful that it keeps shifting. But you keep recycling your own ideas as well. सोनू निगम ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है जिस पे काफी कंट्रोवर्सी हुई है। 4 दिन से टेलीविजन को Yeah, what is that? अजान जो सुबह होती है 5 बजे या कोई भी गुरुद्वारे में या टेंपल में जो आवाज़ें आती है उसकी वजह से लोगों को बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, लोग परेशान होते हैं। See, I can't speak for anyone, but I personally love azan. जब हम लोग तनु मनु टू की शूटिंग भी कर रहे थे लखनऊ में, so I loved, you know, the sound of it. I can only speak for myself. और कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी हो, चाहे वो गुरुद्वारे में हो या भगवत गीता हो या अजान हो, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और मैं हर जगह जो है वो जाती हूँ, चाहे वो कोई मस्जिद हो, चाहे टेंपल हो, चाहे वो चर्च हो। तो हम लोग तो क्रिसमस मास में भी चले जाते हैं हर जगह। सो आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, बट दैट्स नॉट टू से दैट व्हाट ही इज सेइंग शुड नॉट बी sort of, you know, considered. That's his opinion, and he should be respected for that. And I think that's the idea of bringing it to social media, isn't it? So it can be discussed. If that answers your question. या अच्छा, लक्ष्मी बाई की जैसी तैयारी चल रही है, आप रेस कोर्स भी गई थी और वहाँ पे सीख रही, कैसा चल रहा है? Yeah. Let her Just Liva related question. So, मणिकर्णिका क्वीन ऑफ झांसी, उसके लिए मैं राइडिंग एंड स्वॉर्ड फाइट आई एम ट्रेनिंग इन दैट, और उसकी तैयारी अच्छी चल रही है. वी आर स्टार्टिंग इन जून फर्स्ट वीक, और अभी हम लोग मई फर्स्ट वीक में वी आर अनाउंसिंग द प्रोजेक्ट in a big way. So you guys will get to know everything about it on the in May first week, 4th of May. सर, आप तो बताइए कंगना को क्यों चुना आप लोगों ने इसको ब्रांड एम्बेसडर? Because if you know Kangana, she is a fashion icon. She's a very natural person, and I think a dynamic person. And if you look at the Liva, the personality is very similar. It's about flow, it's about freedom from movement, and it's about natural. So I think the brand fit is great. So how has your association Kangana been with Liva as a brand and the development of this brand? I think we've started together. Liva has launched with me, and I see this tremendous growth and love that Liva receives, and I feel so happy, and I feel like a mother would feel for a kid. So I have that kind of a relation and association with them, and they've been extremely kind, and the latest campaign that we have shot has been a huge success. And the fabric in itself is doing great because of the quality, and eventually what sustains and remains is the quality, the kind of honesty you make it, and how what love consumers they give your product. Eventually it's all about that, and it's a great fabric. As you all can see, I'm getting a lot of compliments. This is Liva Creme, the new fabric that we've launched, and I'm sure it's gonna get more love than the fabrics we have launched in the past. कंगना, इसके अलावा आपने आज वर्क किया ब्रांड पर, तो ऐसी कोई मेमोरी है, फर्स्ट मेमोरी जो आपने वर्क किया हो ब्रांड पर? इस दौरान बहुत सारे ब्रांड पर वर्क किए होंगे आपने, लेकिन फर्स्ट मेमोरी जो आप मतलब शेयर करना? So आज जो गाना चलाया था वो फैशन का चलाया था, तो मुझे मेरे बहुत पुराने दिन, I think 19 or 20, मैं बहुत छोटी थी, और मैं अपने दोस्तों को बता रही थी कि प्रियंका जब सेट पे आती थी, I used to get so starstruck because she was the superstar on sets, और हम लोग सब मॉडल्स ऐसे, I used to be with models, हम लोग ऐसे छुप छुप के प्रियंका को देखते थे. So yeah, मुझे वो सारे दिन याद आ गए. So I think that time was the time when I walked on the ramp for the first time. We take the last question. फैशन की बात आती है तो आप पर आकर के नजरें हो या नाम हो दिख जाती है, हम शौक को भी करेंगे. तो आज जब आप रैंप पर चले हो और जब आप कोई ब्रांड आपके पास आता है, क्या वो एक चीज़ है जो आपको हाँ करने पर मजबूर है? See,
आजकल इतना आई थिंक बहुत ज़्यादा हर चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो रही हैं, लेकिन मैंने शुरू से ही हमेशा चाहा है कि मैं जो भी ब्रांड करूँ वो इस तरह का होना चाहिए कि उसमें डिग्निटी होनी चाहिए, यू नो. सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होती है कि इट्स नॉट इनसेंसिटिव टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड पीपल. बाकी जैसे फैब्रिक है, यू नो, लीवा फैब्रिक है, इनकी जो फिलॉसफी है, दे रिसाइकल, यू नो, इट्स अ नेचुरल मटेरियल, वेरी कंसिडरेट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली. सो इस तरह के जो वेरी डिग्निफाइड प्रोडक्ट्स थे, हम भी एस्पिरेशनल होते हैं कि हम लोग उनसे कनेक्टेड हो और हमें ऐसा ब्रांड मिले. सो दैट्स व्हाट आई रियली सीक इन अ ब्रांड. It's very soft. It's extremely soft, and this is a luxurious version of Liva, and perfect for, you know, like grand affairs, like gowns or party dresses, wedding dresses, and all of that. Thank you very much.